It has still started recording. Just give me a minute. Oh, yeah, it has started recording. Hi, everyone. Welcome to session 5 of Dastarkhwan 101. And we are headed to Bhopal today, my city. And hence, I'm super excited. And we have with us Salma Appa, of course, but we also have Rashid ji. And he is going to, tell us fascinating stories of Bhopal. Actually, initially we were speaking with Rashid ji's wife Aisha to speak with us in the session, but when she realized it wasn't as much about the cooking as it was about the talking and the stories around food, she happily passed the buck on to him. And she said what she said was interesting. She said, "I'm from Hyderabad. I can cook. He's from Bhopal. He can talk." And that crux explains Bhopal and Bhopalis beautifully, actually. If you know anything about Bhopalis, you know they can talk till the end of time, till the cows come home. Not just till the cows come home, but till they have their dinner, sleep, and go out to graze the next morning, too. Nobody can out talk a Bhopali. And if you're talking about your city, then it's endless. But we don't have endless hours, so I will hurry up and pass the buck on to Appa. So Appa's going to speak with us for the first 15 minutes, 15. I Then cannot Rashid ji, go. Two Bhopalis are there. Haji. I said two Bhopalis are there, so I have to be careful. So I will be very short, I think. Right, right. Not You at all. all both can take the floor and then tell the listeners what Bhopal is. Okay? जी तो बिल्कुल. मेरे सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम और आदाब और बहुत सारा प्यार ऑल्सो कि हर बार आप इतनी अच्छी तरह से आते हैं और प्रोग्राम को सुनते हैं और तारीफों के फूल भी बांधते हैं, तो पता नहीं सही होते हैं या नहीं, मगर आपका शुक्रिया। तो आज हम लिए चलते हैं आपको नवाबों की नगरी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी। खूबसूरत झीलों का ये शहर न सिर्फ अपनी तारीखी रिवायत बल्कि अपने जायकों के लिए भी बड़ी शोहरत रखता है। 1818 में अंग्रेजों ने भोपाल को नवाबी रियासत का एजाज बख्शा। मगर भोपाल की बेगमात बहुत शोहरत रखती हैं क्योंकि भोपाल की बेशतर हुकूमत बेगमात के सुपुर्द रही और इन चार बेगमात की नस्लों ने बड़ी लियाकत से 157 साल तक भोपाल पर हुकूमत की। बिल आखिरी आखिरी नवाब बेगम ने 25 साल हुकूमत करने के बाद मुतकायद हुई और हुकूमत की बात अपने बेटे के सुपुर्द की। इस तरह नवाबजादा मोहम्मद हमीदुल्लाह खां भोपाल के आखिरी नवाब थे। सन 1947 में भोपाल भी दूसरी रियासतों की तरह हिंदुस्तान का हिस्सा बना, मध्य प्रदेश कहलाया और नवाबी दौर अपने अख्तिताम को पहुंचा। सरकार ने गो नवाबी खानदान को ताजिंदगी के जागीर अता की। दो झीलों के दरमियान ये आबाद शहर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बेहतरीन मिसाल है। मस्जिदों से आती हुई अजान की सदा, मंदिरों की घंटियों की आवाजें, खुशनुमा इमारत, बारौनक बाजार, झीलों का खामोश पानी, ये है भोपाल का छोटा सा मुख्तसर खाका। आइए आप जरा भोपाल की तारीख पर भी नजर डालें। 1707 में मुगलिया फौज के अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने औरंगजेब की वफात के बाद राजा भोज के बजाय शहर पर कब्जा किया, उसे दोबारा मुस्तहकम किया और अपना इक़्तिदार बढ़ाया, भोपाल शहर की बुनियाद रखी। दोस्त मोहम्मद खान अफगान निजात थे, इसलिए भोपाल की इब्तिदाई तारीख बड़ी हद तक इस्लामी तहजीब के दायरे में रही और आज भी भोपाल बड़ी हद तक मुस्लिम माशरे से जुड़ा हुआ है। मैंने साहिबजादा राशिद अली खां और उनकी बेगम आयशा अली खां और मेरी अजीज दोस्त यास्मीन मसूद के इसरार पर 2-3 साल पहले भोपाल का सफर किया। इन सब की बेलूस मोहब्बत, प्यार, मेहमान नवाजी और गर्मजोशी ता जिंदगी मुझे याद रहेगी। उम्मीद है बहुत जल्द
मैं फिर एक बार उनकी मेहमान नवाजी का फायदा उठाऊं और भोपाल पहुंच जाऊं। श्यामला पहाड़ी पर बनी श्यामला कोठी 1911 में जनरल उबैदुल्ला खां के हाथों तामीर हुई। नवाबी दौर के इख्तिताम पर ये नवाबी खानदान की रिहाइश गाह बनी। 1945 में 17 साला दुल्हन सुरैया बेगम ने श्यामला कोठी में कदम रखा। आयशा ने मेरे सफर के दौरान में श्यामला कोठी की दास्तान सुनाई और बड़ी दिलचस्प बातें बताई। आयशा ने बताया कि वसी रकबे में फैली कोठी कई हिस्सों पर मुश्तमिल है। बावर्ची खाना बहुत वसी है, जहाँ 5 रकाबदार और 15 बावर्ची काम करते हैं। अनवा व अक़साम की ग़िज़ाएं तैयार करते हैं। हर रकाबदार, हर बावर्ची अपने फन में माहिर और यकता। उन्होंने बताया कि उनका एक रकाबदार था सिराज। उसने तो अपने फन से सबको हैरान कर दिया। मैंने कहा भाई ऐसा क्या हुनर था उसके पास। आयशा ने कहा वो बेकिंग का माहिर था और देगची को सील बंद करके अंगारे ऊपर रख के केक बनाता था। छोटे मोटे केक नहीं, बर्थडे केक नहीं, 3-3 मंजिला केक भी वो बनाया करता था। बड़े ताज्जुब की बात है कि उस जमाने में भी इतने तजुर्बेकार रकाबदार हुआ करते थे जो मेहमानों को अंगुष्ठ पर दंडा कर देते थे। श्यामला कोठी के अतराफ का इलाके में घना जंगल है और ये जंगल है शिकार का बेहतरीन मरकज। श्यामला कोठी के अफराद शिकार के शौकीन। दिलचस्प मसला उनका शिकार करना था। शिकार के खैमे नस्ब किए जाते, शिकारगाह बनाई जाती, एक पूरा मुलाजिमों का अमला माँ बावर्चियों के हर वक्त वहाँ तैयार रहता था कि यहाँ शिकार हुआ और वहाँ खाना पका। उम्दा कबाब, उम्दा पसंदे और तरह तरह की चीजें शिकार के गोश्त से बनाई जाती थी। इस संबंध में मुझे आयशा ने एक और बात बताई, वो ये कि शिकार का गोश्त पानी में नहीं धोया जाता था, बल्कि गीले कपड़े से साफ किया जाता था। अब राशिद साहब मुझे बता देंगे बाद में कि बातें सही हैं या नहीं। गीले कपड़े से साफ करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि उससे उसका नमक गोश्त का खुले पानी में धोने से गोश्त का नमक जाया हो जाता है। शिकार किए गए जानवर, बड़े बड़े जानवर जैसे नील गाय, हिरन वगैरह तो फौरन पका लिए जाते थे और ये था फिलपोरा का आगाज। अगर आप देखें तो फिलपोरा के लुगती मानी है इमीडिएट, फौरन। ये उस फौरन पकाए जाते थे, इसलिए इन्हें फिलपोरा कहते थे और आहिस्ता आहिस्ता ये पकवान का नाम हो गया फिलपोरा, जो आज भी भोपाल का बड़ा मशहूर पकवान है। फिलपोरा में बड़े 3 मसाले दिए जाते थे, शिकार का में पकता था। मसालों का तो सारा बहुत कुछ था नहीं उनके पास। साबुत लाल मिर्च, प्याज और नमक, ये मसाले तमाम शिकार पे लगाए जाते थे। कूट कर लगाए जाते थे। मिट्टी के बर्तन में शिकार डाला जाता था और जेर जमीन दफन होता था और उसी में वो पका करता था। अच्छा, छोटे छोटे शिकार जैसे खरगोश है, जंगली मुर्गी है, जंगली बतख है, ये सब पकवान भी उसी वक्त पका कर कबाब वगैरह बनाकर हाजिर किए जाते थे। शिकार किए गोश्त पर माहिर बावर्ची अपना बहुत फनकारी दिखाते थे और हर बार शिकार का एक नया जायका वो तैयार कर लेते थे। अब जब गोश्त बच जाता था शिकार का, वो क्या होता था, इतना सारा तो खा नहीं सकते भाई, तो जायद गोश्त को मलमल के कपड़ों में ढांक कर धूप में सुखा दिया जाता था और बरसात के मौसम में जब शिकार नहीं मिलता था, इन्हीं से खाने का लुत्फ उठाया जाता था और उससे लजीज पकवान तैयार होते थे। ये पता लगता है और ये सब जानते भी हैं कि भोपाली नवाब गोश्त के शौकीन थे, लेकिन आसपास के इलाकों में सब्जियां भी बड़ी बहुतायत में होती थी। मेथी, चौलाई और दूसरे साग, मूली का साग, लहसुन, अदरक, ये सारी चीजें वहां पैदा होती थी और उनका इस्तेमाल बखूबी किया जाता था। साबुत धनिया साबुत धनिया और ताजा धनिया, इन दो का इस्तेमाल तो खानों में भोपाल के मस्त था। बड़ी दिलिया से धनिया का इस्तेमाल होता था और उसकी खुशबू इस्तेमाल की जाती। ये भी बता दें कि भोपाल के जायकों में बहुत सारे जायके मिले हुए थे। इनमें अफगान जायका भी था, उसमें रामपुर का जायका भी है और उसमें अवध का जायका भी है और हैदराबाद का भी जायका है। लेकिन इन सब जायकों के बावजूद भोपाल का अपना एक इनफिरादी जायका है, जिसमें न तो हैदराबाद की खटाई है और न अवध के मुरक्कन तकल्लुफ खुशबूदार खानों की तरह सकी है।
सुल्तान शाहजहां बेगम ने शादी ब्याह के मौके पर अवध के बावर्चियों को जरूर बुलाया और अपने दस्तरखान को वसी किया, लेकिन भोपाल के जायके अपनी जगह पर कायम रहे। भोपाल का दस्तरखान देखा जाए तो शिमाल और जुनूब के जायकों का बेहतरीन संगम है। मेरी मुलाकात सुल्तान जहां की बेगम पड़पोती नीलूफर खान से हुई और उसकी जबानी भी मैंने बड़े मजेदार किस्से सुने। नीलूफर ने बताया कि शाहजहां बेगम रंगों की दिलदादा थी और वो जश्न भी मुनक्किद करती थी रंगों की मुनासिबत से। जब रंगों की मुनासिबत से जश्न होते थे, जैसे जश्न हरियाली, हर चीज हरी होती थी, हर चीज सब, यहाँ तक कि खाना भी सब हुआ करता था। और रिजाला जो आज भोपाल का मशहूर पकवान है, उसी जश्न हरियाली का नतीजा है। जश्न का पूरा इंतजाम रंग के हिसाब से होता था। मेहमान और मेजबान उसी रंग में लिबास पहन कर आते थे, पकवान भी उसी रंग का होता था। पूरा माहौल द होल एम्बियंस वुड बी ग्रीन। और इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट रंगों के जश्न मुनक्किद हुआ करते थे और लोग उनका मजा उठाते थे। भोपाल का रिजाला कलकत्ता के रिजाले से बहुत फर्क है। भोपाल का रिजाला बिल्कुल सब्ज है। यहाँ के पसंदे जो धुएं में बसे रहते हैं, उनका मजा भी फर्क है। ये सिर्फ मेवों में बसे पसंदे फुलबहार एक बार खा ले इंसान तो नीयत ना भरे। तार कलिया भोपाल के दस्तरखान का मशहूर पकवान हिकायत है। पता नहीं ये भी सही है या नहीं, राशिद हमको बताएंगे कि गलावत के कबाब जब लखनऊ में इस कदर पॉपुलर है और हर आदमी जो लखनऊ जाता है वहां से गलावत के कबाब लेकर आता है। असल ये भोपाल का रकाबदार था मुराद, जो भोपाल से लखनऊ पहुंचा और वहां जाकर उसने अपनी एक छोटी दुकान कबाब की खोली और वहां कबाब का कारोबार शुरू किया। इत्तेफाक से वो पतंग उड़ाते हुए छत से नीचे गिर गए, एक हाथ टूट गया और इसीलिए वो टुंडा कहलाए। उन्होंने गलावट के शाही कबाब की बजाय दुकान का नाम टुंडा कबाब रख दिया और आज तक ये कबाब टुंडे के नाम से, टुंडा कबाब के नाम से बेचे जाते हैं, खाए जाते हैं। भोपाल में कहते हैं ये कबाब, गलावट का कबाब, रस बिस्किट पर रख कर पेश होता है। हालांकि लखनऊ में देखा जाए तो गलावट का कबाब पराठे पे रख करके दिया जाता है, मगर भोपाल में ये कबाब रस बिस्किट पर रखकर दिया जाता है। भोपाल की झीलों में मछलियों की कसरत है। इसी तरह दस्तरखान पर मछली के कबाब, सालिम मछली, मछली जलको और तली मछली भी पाई जाती है। अब चले जरा सा देखते हैं जहानुमा पैलेस का क्या हाल है। जहानुमा पैलेस भी नवाबी दौर का ही एक इमारत है। यह अब यहाँ का मशहूर होटल भी है और नवाबों की सरकर्दगी में उम्दा और जायकेदार खानों का जामिन है। जैसे ही मैं खाने के कमरे में दाखिल हुई, खानों की खुशबू से भूख तेज हो गई और देखा तो अचार, गोश्त, गोश्त का कौरमा, कीमा पुलाव, बिरयानी, रिजाला, बाफला, पिलफोरा, वाह। मैंने देखा शेफ की तरफ और मैंने कहा ये तो नॉन वेज हुआ और वेजिटेरियन खाना कहाँ गया। उसने मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा और दूसरे टेबल की तरफ इशारा किया जहाँ वेजिटेरियन खाने सजे हुए थे। उनमें भुट्टे की सीख, पापड़ की सब्जी, पालक पूरी, साबूदाना खिचड़ी, दही के साथ बाफला दाल और मौसम की बेहतरीन सब्जियां मौजूद थी। आसपास के हमसाया सूबों का असर भी भोपाल के खानों पर बहुत है, स्पेशली वेजिटेरियन के लिए। राजस्थान और गुजरात का गहरा असर ये वेजिटेरियन खानों में पाया जाता है। वहाँ जहानुमा पैलेस के मैनेजर ने हमें बताया कि हैंड रिटन रेसिपीज का भी फायदा उठाया जाता है। जो उनके पास कुछ रेसिपीज मौजूद हैं, तो हम कहेंगे राशिद साहब से कि अगर वो मौजूद हैं तो उनको हम तक पहुंचाने की रहमत करें, ताकि हम भी उन खानों का लुत्फ उठाएं या फिर हम सबको वहां बुलाएं और उन खानों की दावत दें। जहां नुमा पैलेस के तकल्लुफ खानों के बाद अब गुंजाइश भी नहीं रही पेट में, मगर क्या किया जाए। चारों तरफ से आवाजें आई, चटोरी गली चलिए, चटोरी गली चलिए, चटोरी गली। अब हमने कहा पर चटोरी गली तो खाओ बाजार की तरह होगी गुजरात के, पर चले क्या करें। हमने कहा बात भोपाल आए हैं तो पर ये भी देखते चले हम। तो चटोरी गली पहुंचे। चटोरी गली में खाने पीने की छोटी मोटी दुकानें हैं, जहाँ हर दम पकवान तैयार रहता है। कोई सुलेमानी चाय का वहां मजा ले रहा है तो कोई नहारी का प्याला लिए बैठा है। और भोपाल का नाश्ता भी कुछ अजीब सा है।
सुबह सवेरे लोग इस नाश्ते का लुत्फ उठाने चटोरी गली पहुंच जाते हैं। गर्मा गर्म भोपाल का पोहा और गर्मा गर्म सुनहरी जलेबी शीरे के साथ, नमकीन और मीठा, यही भोपाल का निराला नाश्ता। चटोरी गली का बन कबाब भी बहुत शोहरत रखता है। हाथ से कूटे मोटे कीमे का कबाब है जो कि प्याज के लच्छे और चटनी के साथ बन के अंदर रखा जाता है। लोग लेते हैं, बावर्ची को दुआएं देते हैं और आगे बढ़ते हैं। चटोरी गली में चाट की भी बड़ी दुकानें हैं। पानी पूरी, दही पूरी, भेल पूरी, समोसा कचौरी, कचौरी चाट वगैरह वगैरह। इन रिवायती खानों के साथ बर्गर, KFC और पिज्जा की दुकानें भी मौजूद है जो जवान सालों के लिए बहुत जरूरी है। रिवायती खानों से जब उनका जी भर जाता है तो वो अपने महबूब अड्डों की तरफ चले जाते हैं। आपने रसमलाई हर जगह खाई होगी, लेकिन रसमलाई बर्फी कभी नहीं खाई होगी, क्योंकि ये भोपाल ही भोपाल में मिलती है। पत्ते के दोनों में बर्फ का छूरा भर देते हैं, ऊपर से रबड़ी, फिर गुलाब का फुवारा। लीजिए, यखपस्ता, शीरीन और लिज्जत से भरपूर रसमलाई बर्फी दिलो जिगर को ठंडक पहुंचाती है। फालूदा से भरे गिलास, रबड़ी जलेबी की दोने, शाही टुकड़ा, यहाँ की कुछ और मीठी चीजें हैं जो हमने चटोरी गली में देखी। महुआ से बिना मशरूम। अच्छा, अब आपको ये तो सब हो गया, आपने चटोरी गली की सैर कर ली। अब आपको एक मजेदार किस्सा सुनाती चलूं, और वो किस्सा है साइकिल सूप वाले का। कहते हैं साइकिल पर सूप बेचने वाला एक शख्स सालों पहले नेपाल से काम की तलाश में भोपाल पहुंचा। बेचारे को काम तो नहीं मिला, चलो उसने कहा अपनी दुकानदारी शुरू कर दी और साइकिल पर सूप बनाकर बेचना शुरू किया। इस काम में अल्लाह ने उसे ऐसी बरकत दी कि आज भोपाल में कहते हैं उसकी 3-4 छोटी छोटी रेस्टोरेंट या दुकानें हैं जहां वो आराम से अपना बिजनेस करता है और अल्लाह को दुआएं देता है। हिम्मत मर्दा, मदद खुदा। अब आइए, खाने की बात तो पान की गिलोरी पे खत्म करते हैं, जो भोपाल की अपनी असल पहचान है। पान पान का बटुआ हर शख्स की जेब में रहता है। पान के बिना यहाँ की जिंदगी बेकार। पान और भोपाल का जन्म जन्म का साथ है। और अब मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करती हूँ। मैंने आपको भोपाल के जायके और उसका जिक्र का मुख्तसर खाका खींच दिया। अब आप मुलाकात करते हैं नवाबजादा और राशिद अली खां से, जो नवाबी खानदान के फर्द हैं और अपनी बेगम आयशा के साथ बिगड़े नवाब नानी केटरिंग सर्विसेज चलाते हैं और रिवायती खानों से लोगों को आशना करते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं, ये बिगड़े नवाब हरगिज नहीं, बिल्कुल एकदम असली नवाब है। तो आइए मिलते हैं राशिद जी। Thank you, Salma. Thank you so much, Salma I Appa. hope Rashid, I was not very bad because I'm not a Bhopali. You, Hi, you, Raj. you've set the Hi, bar very high. Hi, Rashid. Good to see you. This is Vicky here. Hi, Vicky. How are you? Good to see you, man. Thanks. Awesome. The original man is here. So much Right? for that, Appa. And yes, yes, absolutely. We are so lucky that he agreed to come on and speak with us today, actually. And I can't wait to begin. But before I do, let me tell you a little bit. Appa has already introduced Rashidji, but from what I've understood and what I've read, I believe he's a chartered accountant, and I was most impressed when I read that. And he spent a lot of time, in the corporate world working with the biggies. But he's moved back to Bhopal a few years ago. He wasn't there when I shot Lost Recipes back in 2014. I wish he had been there in Bhopal at that time. But he's moved back to Bhopal a few years ago, and now one of the things that he does is, he's in the business of food, but not just food. He's also, you know, uh, trying to revive, preserve, conserve. There's no right word for everything, all of those together. Not just the culinary culture of Bhopal, but also the culture of Bhopal. And I chanced upon his YouTube channel some while ago, and you must please go and check out Bhopali Tales after today's session. I mean, I spent I think the entire evening just listening to watch one video after the other.
Rashidji, I would prefer that I ask him questions and he give answers because he feels it would be very boring if he just spoke and it would just be a lamba monologue. So I have questions, but before I begin, would you like to tell us something? Would you like to say something to us, Rashidji? Nothing. I think when we're talking of Bhopal, it's very novel because it is the only state in India which was ruled by women for over 107 years. Four generations of women ruled Bhopal. And the fact that we are talking about various things today, those were implemented by these visionary ladies or regents or Nawab Begums back then. They were doing stuff for women, women's education. They were so focused on on uh, on getting equality at that point of time when parda was the norm. It's quite amazing how they took off their parda and they came out when Qudsiya Begum said that she wanted her people to see who their regent was. So it's a very different culture, and how it all evolved with women at the helm of leading the state. It's quite intriguing. My mic was off. Sorry. Yes, it is most intriguing, and we're very proud of it also as Bhopalis. Because Bhopal has historically been a sort of trailblazer. It's created its own territory, which is sort of uncharted. People speak a lot about Awadh and Hyderabad, and over the years, I've realized that Bhopal doesn't really get the focus or the spotlight it deserves. But before we, since you've started with the Begum Nawab, let's begin with a little bit of history and then we go into the Khana. So, we just to paint a clear picture for everyone, who's not from the city, how did it all start? Like, what was Bhopal? Like, Apa has introduced us. She mentioned both Muhammad Khan, but what was Bhopal when he came here, and how did his coming transform Bhopal? So Bhopal was essentially a fiefdom of Gond, uh, small thikanas which were ruled by Gond uh, kings and queens. And those Muhammad Khan, as Salma Appa said, he was a mercenary soldier from Afghanistan. He came and he joined the Mughal army and quickly rose through the ranks and became a general within the Mughal army. Uh, when the empire started falling apart in the 1700s, two generals of the Mughal army left. One was Nizam Ali Khan and one was Dost Muhammad Khan. Nizam Ali Khan fortunately had the entire Mughal treasury. So that was Hyderabad, and Dost Muhammad Khan remained a mercenary because the treasury went to Hyderabad. So, so essentially, he came to Bhopal, and Rani Kamlapati at that point of time engaged him for certain mercenary services, which he did for a handsome sum of money. And ambitious as he was, and he was a great soldier, he established his kingdom just outside of Bhopal in a place called Islam Nagar. And that's where Bhopal started, and that's where the Mughal influence started coming in, and ambition became bigger and bigger, and he made the walled city of Bhopal, which is called Fatehgarh. So that's about how it got established. There are many more stories where a war was fought next to the river Halali, and at night he murdered God knows how many people, and the river was red, and hence it's called Halali. So, so that is it, and then it continued. But in reality, as they say, there was a gunshot that changed the history of Bhopal, and that gunshot was fired sometime in 1807 or 17, and that's when Qudsiya Begum actually became the regent of Bhopal. So she was number 8 after Dost Muhammad Khan. She was the 8th regent of Bhopal. So okay, what was there between 1807
and Dost Muhammad Khan. Like we've heard of the times of the Begums of Nawab, when they took over and continued. But before them, starting from the mercenary ruler of Bhopal, what changed in those roughly 100 years? So the entire state was established, and it grew in size. Those Muhammad Khan passed away, then his son, then it continued and continued for small periods of time. So if you see from 1717, it was 100 years where there were 7 different regions, and then for 110 odd years there were only 4, which were the Begums. So the cuisine also started evolving once, because in reality all your spices, everything came with the Mughals. It's not that we didn't have it. We always had it. We were growing it, but we didn't know how to use it. So the use of it came once the Mughals came to India, and that is what came through over here. But because it was a male-dominated society at that point of time, इतना उसमें खाने पे इतना जोर नहीं दिया जाता था. वो जो नज़ाकत और जो फिनेस खाने में आया है, वो बेगमों के साथ आया. उसके पहले जैसे सलमा आपा कह रही थी, वही फिलफोरा और पसंदे, इट वाज वेरी वेरी बेसिक. अच्छा था, लेकिन दैट वैरायटी डिड नॉट एग्जिस्ट. वो जो बेगमों के बाद आई है. So now that you've mentioned Filpora, could you tell us a little more about Filpora and the entire Shikar culture? So I'm sort of, the fact that there are jungles around and Shikar, if you practice, a lot of Bhopal recipes are Shikar recipes. Yeah. Just a little more insight on that. So essentially, because game meat formed a big part of the protein that was available and what grew in the region. So like Salma Appa said, coriander. Bhopal is on the coriander trail, so they end up putting coriander in everything. लहसुन बहुत उगते हैं. लहसुन का इस्तेमाल खाने में बहुत होता है. And then the produce. So if I start with Qudsiya Begum, she became a regent when she was extremely young, and she lost I think her husband was all of 17 or 18 when he accidentally got shot. So at that point of time, Bhopal was surrounded by Marathas. Like an army of 80,000 was surrounding. So it was all about sustenance and how do we preserve. So Qudsiya Begum के टाइम जो 2 चीजें बहुत फेमस हुई, एक था सूखड़, जो सलमा आपा ने आपको बताया. उस टाइम फ्रीजिंग इक्विपमेंट वगैरह तो होता ही नहीं था. तो जब एक बड़ा जानवर मार लेते थे, तो हाउ डू वी सेव द मीट. सो सलमा आपा ने कहा उसको बारीक काट के उसमें से एक धागा पिरो के उसको टांग के सुखा देते थे और बोरों में फिर उसको रख देते थे. और दूसरी चीज जो कुसिया बेगम के टाइम आई, वो आए टुकड़े. सो टुकड़े, she didn't want anything to be wasted क्योंकि भोपाल was surrounded, so it was like a siege. ना अंदर कुछ आ सकता था, ना आप बाहर जा सकते थे. सो टुकड़े is basically जो रात की रोटी बच गई, रात की सब्जी बच गई, रात का शोरबा बच गया, उसको एक साथ करके और फिर पका के, तो बेसिकली जो बन रहा था वो कुछ फिके नहीं, हर चीज कंज्यूम हो जाए. And then the Shikar actually came with her daughter Sikandar Begum. She was the Shikari. जो सलमा आपा ने कहा समल का जो शौक है, भोपाल is the only place where you shoot fish. You don't put a tackle in. So this was started during Sikandar Begum's time. She was an avid shikari, outdoor person. Pasande bhi usi time evolve हुए. रोगनी रोटी जो आप आटे में घी और दूध और थोड़ी मलाई डाल के बनाते हैं, तो it remains soft and it lasts you a lot longer. So all that started during Sikandar Begum's time. So actually, if you see how the cuisine evolved, every Begum brought in her own touch to the Bawarchi Khanas. And जितने भी खानसामे थे जो बावर्ची खाना संभालते थे, वो भी उनकी मोल्ड में आके उसी तरह से जो बेगम को शौक हो और जो थोड़ा इन्फ्लुएंस आ रहा था शादियों से, अलायंसेस से,
वो सारा बावर्ची खानों में आ गया और वो भी, और फिर वही का वही दस्तरखान पे आया. Most interesting. I mean, I loved it when you said sukhar because that's one of my favorite Bhopali recipes actually. So much so that that's the one I put on lost recipes. Sukhar. We managed to make it, and we did the whole jing bang, drying it, sukha के, फिर उसको जैसे पकाते हैं, वैसे पकाया. So you spoke about Qudsiya Begum, you've spoken about Sikandar Begum. What about, because by the time it came to then the powers had consolidated a bit. There were the principality was richer. It had come into a time of prosperity. Yes. So once the treaty with the British was signed, Bhopal got protection from all around. So it was surrounded by Marathas, so it got protected by the Marathas. Otherwise, they would have never survived. And once the British came in, that's when the state started to prosper, as you say. And the first title of Nawab Begum was given to Sikandar Jahan. And that was a title that the British gave, and it was the first time that a lady was ruling a state in India. So Sikandar Jahan's reign was all about your filfora, your pasanda, your samal. जैसे सलमा आपा ने कहा, हर तरह से बनती थी, कोरमा भी बनता था, तली भी बनती थी, उसके तिक्के भी बनते थे. It was done in many different ways. And then Sikandar's daughter was the complete opposite of her. It was like the artist was born. Shah Jahan Begum was all about art and architecture and promoting Zari Zardozi and having those festivals which Salma Abba spoke about, Jashan-e-Haryali and Jashan-e-Gulabi, where the entire Dastarkhwan Haryali mein, especially monsoon ke baad when Bhopal is fully green, तो हर चीज हरी होती थी, from your rizala to your keema methi to batuए की सब्जी, everything that was related to the produce was there. And similarly, Jashan-e-Gulabi, पूरे फूल खिल जाते थे और गुलाब लगा के, तो हर तरह का कोरमा, कलिये जो मशहूर हुए. कलिया is very very typical to Bhopal. सलमा आपा ने तो किताब भी लिखी उसके बारे में. जो भोपाली कलिया होता है, it's a much lighter gravy, बिल्कुल, and the bird size is below 600 grams. तो उसमें एक feminine touch जो होता है वो आ गया था. और कहते हैं कि भोपाल में करीबन 100 तरह के अलग अलग कलिए थे. खैर मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, मैं तो 2-3 तरह के ही खाए हैं. वो काफी सिमिलर इन टेक्सचर, इन लुक होते हैं. इसमें सलमा आपको बता सकती हैं. आई एम नॉट दैट मच ऑफ अ फूड हिस्टोरियन, and that came in Shah Jahan Begum's time. It was all about the much more finesse came. She was a softer spoken person, very into arts and education, etc. Right. And did the royal kitchens, I mean, are there stories from the royal kitchens that you've grown up with, you've heard something that you'd share with us, like there are always stories. There are stories about all the states and their different kings of eating. भोपाल में कुश्ते बहुत मशहूर थे. So aphrodisiacs खाने के हिसाब से formed a big part of क्या गरम खाना है और क्या किस चीज से गर्मी आती है. तो बहुत सारे किस्से थे, क्या बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए. तो without taking many names, I would like to skip that, but we'll come to Sultan Jahan Begum. She had a British governess when she was brought up, so a lot of Western influence came into the cuisine of Bhopal, and in those days also you had to please the British, so there was a big Western influence that came into the cuisine. Obviously not
novel to Bhopal, but there was a huge Western influence, and part of it is one of the sandwiches that is made with chane ki dal ki sabzi. It's called the Shamla sandwich, which is very popular, very different, and that's the Western influence that came. Salma apna Siraj ki baat kahi thi. Siraj used to go and train at the Taj. So when my grandfather used to be at the Taj. All the Khansamas from Bhopal used to go and train under in the kitchen of the Taj and then come back and tweak every recipe and make it more suited to the Bhopali palate. Fascinating. But I before we go on, I mean, we've sort of spoken a bit about the royal cuisine, and before we go into other things, I just want to first understand. I want people to understand Bhopal, the character of Bhopal a little bit, because that is, I think that's also very important in understanding, how we name the dishes, what the food is. So the entire, I mean, जो भोपाल का character है, the storytelling, the patiyabazi, the love for jeeps, the love for shikar. If you could just tell us a little bit about that, explain, what a patiya is and what patiyabazi is. तो भोपाल की ह्यूमर जो है वो एज इट इज वेरी वेरी ओरिजिनल, मीनिंग यू कैन नॉट गेट इट एनीवेयर. पटिएबाजी तो है ही पॉपुलर. तो पुराने भोपाल में हर हवेली के बाहर फर्शी के पटिए लगे रहते. फर्शी इज दैट स्टोन, और उस पे वही 5 दोस्त या 8 दोस्त रोज बैठते हैं, और जिस दिन जो दोस्त मिसिंग होता है उसकी वहां पे फिर पूरी थ्रेशिंग होती है, उनके बारे में बातें होती हैं, और बीच में करीबन 5 चाय आती हैं, और आवा खाब चाय तो ले आओ यार, और फिर पान आते हैं. पान के बगैर खैर भोपाल चल ही नहीं सकता. तो लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड चाय एंड पान. और सलमा आपा ने कहा बटुआ, चुनेटी, चूना तो सब रखते ही हैं. तो और पान का रिवाज जो है, पानदानों का रिवाज, इट्स वेरी पॉपुलर इन भोपाल. इनफैक्ट all the begums used to eat excessive amounts of पान. उगालदान साथ चलता था कि पीक रोड पे नहीं मारे. तो पीक थे, आज भी सब उगालदान लेके घूमते हैं. जीप में आप देखेंगे उगालदान लेके जाते हैं. शिकार का कल्चर तो था ही भोपाल में. उसी के साथ गप्पों का भी कल्चर आया. मतलब लोग इतनी इतनी ऐसी ऐसी गप्पे देते हैं कि आप से बर्दाश्त ही नहीं हो. So this is Vicky. Vicky is listening, and Vicky is a very regular visitor to Bhopal, so he can also add. Well, I'm just loving the whole thing because I mean I'm Dil se Bhopali because I'm very close to Rashid's brother Omar Ali Khan. We went to college together, and I think I've told you this, Shubhra, also that Bhopal has taken my heart away. The people, the talking, the food, it's unbelievable. And Rashid, I'm coming back soon. Come. So I think there's a lot of pride in what they do, and because outdoors forms a big part of Bhopali's lives. So what happens is चूल्हे पे खाने बनाने का जो शौक है वो मतलब it's अगर भोपाली को आज भी 3 घंटे फ्री मिलेंगे तो वो कहेगा यार कोई देसी मुर्गा ले आए, कोई घी ले आए, कोई मसाले ले आए, वो बैठ के बाहर देसी मुर्गा और मांडे तैयार हो जाएंगे. मतलब it's like an obsession to cook, but it has to be on a चूल्हा, लकड़ी का वो भी. और जैसे सलमा आपा कहती है पसंदे में जो धुआं देते हैं, there's a lot of pride in how they cook. और आपने अगर कभी खाने की बुराई कर दी तो मतलब दिल तो छोड़िए, हर कुछ टूट जाता है. अगर किसी के घर यार बस ऐसा ही था अगर यूं कह दिया तो बस it's over. तो I'll talk a little about the cuisine. Bhopali cuisine had a lot of influences. सलमा आप कुछ कहना चाह रही हैं?
मैं ये पूछना चाह रही हूँ राशिद से कि वो गलावट का कबाब क्या अभी भी रस्ट पे दिया जाता है या नहीं? नहीं, गलावट के कबाब तो बन ही रहे हैं। हम नहीं, ये गलावट भूल के जाते हैं। कबाब रस्ट पे देते हैं या पराठे पे देते हैं आप? नहीं, वो गलावट के कबाब रस्ट पे भी और बन में भी देते हैं। और भोपाल का मेन जो चीज है वो बन कबाब ही है। जो आपको चटोरी गली में भी मिलेगा, वो आपको काजी कैंप में भी मिलेगा, हर जगह आपको बन कबाब मिलेंगे, नली गूदा गोश्त मिलेगा और मांडे मिलेंगे, विच इज स्टेपल। अब हम Right. भूल जाते हैं कि भोपाल की जो इवॉल्व होके जो पाए हैं, pies are very popular in Bhopal. Nihari is very popular in Bhopal, and it's unlike आपको जो दिल्ली में निहारी मिलेगी उससे बिल्कुल अलग है। इट्स लाइट ब्राउन इन टेक्सचर, सिर्फ सौंठ डलती है, सिर्फ सौंठ, एंड दैट इज व्हाट फॉर्म्स द बेस ऑफ द निहारी, एंड इट्स अ ब्रेकफास्ट स्टेपल। अब लोग रात को खाने लगे, मगर निहारी इज अ ब्रेकफास्ट स्टेपल विच केम डाउन, भोपाल में इवॉल्व हो गई है। निहारी हो गए, पाए हो गए, सिरी पाए हो गए, सिरी पाया वेरी फेमस, भेजा इज वेरी फेमस। We forget it because what's happened is that Bhopali cuisine, in reality, originally, is, as Salma said, it's filfora, it's pasanda, it's kache keeme ki tikkiya, it's the shamla sandwich, it's your rizala, and और दो तीन तरह के कलिए हैं, मुजाफिर और जर्दा। दिस इज वे भोपाल, दिस इज ओरिजिनल टू भोपाल। बाकी सारी चीजें जो आई हैं, दैट्स कम थ्रू वेरियस इन्फ्लुएंसेस, भले वो मैट्रिमोनियल हो, भले कहीं का खनसामा आ गया हो, जावरे से कोई आ गया, यहाँ से कोई आ गया, ग्वालियर से कोई आ गया, तो उसमें वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, ऑल डेवलप्ड इन दैट वे। Right. I'll just ask. Maybe there's a question which is asking what Silfora and what Samal are. What are these things? So, for those who are not familiar with the food of Bhopal, could you just explain, maybe the Rizala, the Silfora, and Yeah, Samal? so Just a few filfora is basically a कुटा हुआ कीमा। तो सिलबट्टे पे उसको करते हैं, बट उसको बिल्कुल पीसते नहीं है। जो कीमा बनता है वो थोड़ा सा मोटा होता है। So and as Salma Appa said, it's something related to शिकार के फिलफोरा, मतलब फौरन बन जाए। तो जैसे ही आपने शिकार किया तो गोश्त वहीं पे दुचल के उसमें खड़ी लाल मिर्च और 2 या 3 मसाले तो खैर डलते ही नहीं, खड़ी लाल मिर्च, नमक, और वो सब करके it gets ready। क्योंकि आप उसको पूरा पीसते नहीं है, it retains the juices, so it comes out a lot more juicier than a keema. And Rizala is primarily coriander based. So Calcutta Rizala is white, Bhopali Rizala is green, and the garnish of Bhopali Rizala is badi badi hari mirach kaat ke, and half boiled eggs cut into half is the garnish. So it's a coriander based chicken. And the third one you asked? Samal. So Samal is basically in English called the snake head. So it is the fish is called snake head. It is एक ही उसमें बोन होती है, तो बिल्कुल फिले निकलते हैं। इट्स अ लिटिल ऑन द ड्रायर साइड, वेरी चंकी एज अ फिश। Do I like Samal a lot? The answer is no. I like an oilier fish. I like fish which has a lot more oil, and Vicky can jump in and say okay, all chefs prefer that. I'm not a chef though. So samal is like somewhat like an eel, right? Yes, a big eel, and it's Yeah, called like a a big. snakehead. Yeah, I saw it. I saw it in the old fish market in Bhopal Yeah. when Robin took me in the morning there. Yeah. So Yeah, the amazing Samal, fish. so Samal can be made in many ways. It's a beautiful fish. Bhopalis to swear by it. Uh, but my personal preference is an oilier fish, which has a lot Right. more oil. Yeah, you mentioned halali. आजकल सब वहाँ पे फिशिंग करने और वहाँ की मच्छी फ्रेश फिश खाने जाते हैं and The taste of fish of halali, people say, is a lot better than any of the talabs in and around Bhopal.
Right. We haven't spoken about the talabs. Has that influenced the cuisine in any way? The fact that Bhopal has these lakes, massive, beautiful lakes. So the culture of fishing in Bhopal, both tackling and shooting fish, is because of having as many lakes as there are in Bhopal. I don't know. I think there are 21, if I'm not mistaken, but the two, three really large ones, including the Bada Talab. So Bhopalis are divided into two. The original Bhopalis are called Barru Cut, and the later Bhopalis are called Barru Bose. So Barru Cut, where the upper lake is, a very peculiar grass used to grow called Barru. So during Dost Muhammad Khan's time, the original Bhopalis actually cut the Barru for the lake to get that depth of the lake. So the original Bhopalis are called Barru Cut. And the Bhopalis who later migrated to Bhopal are called Barru Bose because उन्होंने आके Barru बोई. Right. That's interesting. This I did not know. Fascinating stories. Well, would you tell us one of the Shikar gups, please? Because I loved them when I was watching your channel. So anyone. So the most recent one I've heard is from my friend Baba Badwai. He said कि साहब मैं गांव पे था तो मुन्ना भाई आए और मैं उनको लेके गया तो हमें बहुत बड़ा नील मिला, बहुत बड़ा. तो साहब उन्होंने 30 निकाली, एक गोली चलाई तो साहब वो तो इतना भी नहीं हिला. कहने फिर दूसरी गोली चलाई तो कहने फिर नहीं हिला. कहने मुन्ना भाई थोड़े एथलेटिक आदमी थे, कहने वो भाग के गए और कूद के बंदूक के साथ नील पे बैठ गए. कहने साहब वो नील तो टुक बुक करके चला और जो गया है तो कहने कसम खुदा की उसी नील पे साहब वो 2 चिकारे मार लाए. तो ऐसी ऐसी स्टोरीज है कि आप मतलब द शिकार स्टोरीज डोंट एंड. Yeah, and one can listen to them endlessly. I love the one where you were speaking about Maulana Saab. That was another great one. No, Yes. the actual male blue bull in Bhopal is known as Maulana Saab क्योंकि उसकी इतनी लंबी दाढ़ी होती है. That is the Bhopali humor for you also. Yeah. I mean, there's the interesting thing about Bhopal and Bhopalis is that we never take ourselves too seriously. You know, I think that is a defining character, you know, which is different from other places. So one doesn't really take themselves too seriously, and It's all about nice. having a good laugh with friends and having that camaraderie when you go outdoors. एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे पे हंसना, and that is what keeps them young and keeps them going. So that is a clear trait of a Bhopali besides giving lambi gups. So it becomes very interesting. Right. Um, would you share with us, your memories from your childhood of what was of feasts and banquets and what was cooked at them, or maybe what was eaten on special occasions, perhaps at a festival, or just eaten every day at home? Is there anything specific to any occasion? I think we more or less touched upon everything during the course of our discussion. Meaning the feasts were feasts to kya kahunga, the bigger dinners and the banquets. You will always somehow you won't find rizala in them. So it was more the kormas of different types, and most tables that you will find during feasts would be rather red in color. So there'll be भले वो पसंदे तो होते ही हैं, कच्चे कीमे की टिकिया, 2-3 तरह के कोरमे होंगे, मछली का होगा, गोश्त का होगा. Bhopalis don't prefer broilers at all. They stay away from. They'd rather not eat any non-vegetarian protein than to eat a broiler. There's a clear this thing against it. Why? I don't know. That's वो कहते हैं मियाँ फार्म की होती है वो फार्म की.
Yes, the Bhopali language is also very interesting, you know, the Arya and Jarya. जा रही हूँ Yes, yes. खड़े खड़े मुस्का रही हूँ Right. There are a few questions that have come in. I think yeah we've mostly spoken about, you know, covered everything. If there's anything that you want to add, of course, please go ahead. Okay. overstep my brief um, so I'll ask some of the questions. Okay, so there's a question talking about the Maratha. You said the Marathas surrounded Bhopal. So was there an influence, on the food as well? to a certain extent. See, the Marathas themselves were very influenced by the coastal places where they got married. So a lot of coastal influence came into the Holkars, Gwalior, etc. because of alliances, and some of it also moved. For example, Bhutte ki Kees ho gayi, Bafle ho gaye. This is all from the Holkar and Maratha belt. A lot from Gujarat came in. So the vegetarian cuisine was significantly influenced, but the non-vegetarian cuisine was very novel to Bhopal. Right. Yeah, that's true. The vegetarian cuisine, and also with the business community coming in, you know, and the Jains coming in, there's the vegetarian cuisine was influenced by them also. Like we have Yeah, the samosa stuff with kelas in केलाज Bhopal, which और आलू की कचौरी, दाल की कचौरी, हींग right, की कचौरी. सो आपने जो सलमा आपा ने कहा पोहा जलेबी, this is not very native to Bhopal. This is all the influence that came from primarily from Indore. I am actually sitting in Indore. It's the street food capital of India. It's just cutting edge. Sarafa Bazaar is cutting edge. It's cutting edge in right. terms of innovation, in terms of everything. So a lot of the influence, also Yashwantrao Holkar and Hamidullah Khan were great friends. Hmm. So there was a lot of exchange of chefs, of recipes, etc. that happened. Right. Was there any exchange of chefs from any of the other principalities? So No. many. So, so, Okay. so a lot of the cuisine that came in was when the matrimonial alliance happened with Jalalabad. So that's when a lot of cuisine came in. Hyderabad was a big influence, big influence. Awadh was a big influence. But then everything was tweaked to become, meaning you can't compare. See, in terms of cuisine in India, it's Lucknow, it's Hyderabad, it's Delhi, and to a certain extent, I'd bring in Kashmir. Otherwise, meaning everything else is everyone's collected and influenced by खानसामा आ गए, cooks exchange हो गए, जब भी शादी हुई तो उनके साथ 3 खानसामा आ गए, तो that brought in a lot of variety in the food. Right. Having said that, there's a question about how the spicing of the food of Bhopal is different from, say, an Awadh or a Hyderabad. Completely different because the spicing of the food was dependent on the produce. तो हैदराबाद में अम्बाड़ा हर चीज में डलता है. लखनऊ is extremely novel in its own way, meaning उनका from अदरक का हलवा to मिर्ची का हलवा, तो मतलब they were cutting edge in terms of innovation. भोपाल was more on, यहाँ से कुछ ले लिया, वहाँ से कुछ ले लिया, अपना tweak कर दिया. मगर the produce, if you see the tables, they were primarily more influenced by what was grown in the area and what was Right. available. Absolutely. And I had, okay, how is just, this question, how, I mean, the biryani, okay, that's always a question. How is the biryani of Bhopal different from other biryanis? The biryan of Bhopal different So from other Bhopal biryanis? doesn't have biryani. We have biryani. Bhopal has pulao. और पुलाव में जो मेहनत लगती है वो बिरयानी से कहीं ज्यादा लगती है. पुलाव बनाना is a task in itself. And Bhopal में one is your yakni, which is very novel to Bhopal. Again, a lot of effort goes into making a good yakni because there's hardly any spices in it. So the yakni has to be that good that it flavors the pulao to a different level.
इन्फ्लुएंस के साथ दूध का पुलाव भी बनता है, मगर इट्स नॉट नेटिव टू भोपाल. मगर यखनी इज वेरी भोपाली. यखनी शोरबा भी बनता है भोपाल में. तो आई थिंक बिरयानी वी लीव टू हैदराबाद एंड बॉम्बे एंड दिस. भोपाल में बिरयानी इन रियलिटी बनती नहीं है. एक चीज है जो सलमा आप बताना भूल गई, भोपाल में जब पुलाव या बिरयानी अभी भी बनता है, उसमें मीठे चावल मिलाए जाते हैं हमेशा. तो वो जो जर्दा होता है उसको मिला के, so it's always on the sweeter side. Right. And very often, I mean, at least in the old city and all, you get it at like, 9 in the morning, and you Yeah. you have people having it for breakfast. Like Yes. it's a standard practice. If you're having your ठेलों chai. पे, दुकानों पे, हर जगह. Yeah, so that is another very Bhopal thing. Like, you get up in the morning, and people don't wake up early. Bhopalis are lazy. I mean, and we accept क्योंकि it. पटियों पे बैठे रहते हैं ना, 3 बजे सुबह तक तो पटिये तोड़ते हैं, तो फिर उठेंगे कैसे? आराम से उठते हैं और उठ के सीधा ये बिरयानी खाते हैं. Right. So I'll just check if there are any more questions. Otherwise, we can call this. Jyoti, I didn't understand this question of yours. What's that one slice of Bhopal that has one spice of Bhopal? Is there one spice that you would connect to Bhopal? ये तो सलमा आपा बताएंगे, मगर मेनली इट्स कोरिएंडर. Dhania. Yeah. Right. Other Garlic than or- that, Garlic. हाँ, लहसुन और कोरिएंडर जो उगता है वहां पे, और वही यूज होता है ज्यादा. जी बिल्कुल. So if there are, okay, there's a question on mande. Okay, Meenal is asking what mande is, and is it anything like the mande you get in Maharashtra? नहीं, so mande is basically like a रुमाली रोटी, but it's much larger और गोल बनती है. और it's much thinner also than a रुमाली. भोपाल में कहावत है कि कभी कभी एक मांडे से पूरा खानदान खा के और सुबह टुकड़ों के लिए भी बच जाती है. Right. So that was mande. I've not eaten the mande in Maharashtra, but I think there's one in Konkan which is also a very large roti which is made at weddings. So like you Could be said, similar. yeah, it's come via the Maratha influence, and who were influenced by coastal Maharashtra. Yeah. So okay, so that's interesting. That's something I learned today. So I think that's mostly it. Anything would you like? We can take with us as we go. नहीं, बस खुश रहिए, आबाद रहिए, खाने बनाते रहिए. Enjoy yourself. God bless you all, and thanks for listening in. I hope we didn't bore everyone. No, not at all. I mean, I am not bored one bit, but thank you so much for agreeing to do this with us today. It's been lovely, and thank you, Appa. I think Chef wants to say something. And hope Raashid, you owe me a long evening in Bhopal. Done. Come soon. I will come. I'm going to call you tomorrow. I'll speak. All right, done. Thank you so much, guys. It was an amazing Thanks a session. lot. Thank you so Thank much. you. Bye bye. Thank you. Appa, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं कह रही थी राशिद को कि हम लोग जल्दी भोपाल आएंगे. बस जी. यही कह. ठीक है. So Okay. thank you very much. Thank you. It's been a lovely session. You know, also I mean, I'm quite close to his younger brother Omar Ali, and he, when